My dear friends, namaste, good evening, salam, and we have kept this program to aware about the NABH. Nowadays, you are seeing we are facing so many problems due to the law and regulation overburden of these. So today we are discussing this matter so that we can be at ease with some solution. So now I request Dr. Anand Jha, who is a program director of this program. Dr. Nishinath Jha is senior consultant physician at Fortis Hospital, Shalimar Bagh, and he is a director of the Good Health Clinic, Shastri Nagar, Delhi, and he is a general secretary of the North Delhi Physician Forum. Now I request Dr. Jha to start the proceeding, please. Dr. Jha. Thank you, Dr. Chavda, for such a wonderful words. And today's our webinar is sponsored by North Delhi Physician Forum. That's where Dr. Chavda is the founder president, Dr. President, and myself, General Secretary, in association with United Private Clinics and Hospitals in Rajasthan, Upchar. You all have must about the Upchar. It's a very wonderful organization, and they were such a good doctors, and they are very fighters. So it has come in a big way. Earlier we used to see the post of Dr. Rajsekhar Yadav, and used to very get impressed. Now we are one-to-one with him with this Upchar Association, and they have all the members are very, very knowledgeable and very committed. So first of all, I will not take much time, and topic, as you all know, pros and cons of NABH, or what is the future of medical system in the NABH era. NABH, whether it's good or bad, I think this is all going to be discussed by the Dr. Chavda and all the learned panelists. Somebody who's got a very legal knowledge, somebody who's got a very clinical knowledge. So this is going to have very good discussions. First of all, I request Dr. Rakesh Sood. Dr. Rakesh Sood, he is our presently president of North Delhi Physician Forum. He is a very senior consultant physician, Fortis Hospital, Shalimar Bagh. He has got his own clinic in Shalimar Bagh also. So I request Dr. Rakesh Sood, give the welcome address for this webinar of the two eminent associations. Good evening, everybody. On behalf of North Delhi Physician Forum, it's a privilege to be associated with Upchar again. We had a very successful and well-attended seminar previously, and this is a really important topic. As all of us are aware, once the NABH has come, the main concentration of all the treating doctor is to complete the paperwork. Previously, we used to concentrate on the treatment, clinical treatment. Now you had to cover. Writing notes has become more important. Covering yourself from litigation has become more problem rather than patient care. Now, this is a major issue which most of us are facing. Unless your hospital is NABH certified, you cannot get medical treatment. Mediclaims are not being covered under this. So for day by day, they are adding so many new things. They're cutting down the charges for the doctors under this scheme. And who is the suffering? Our young generation is going to suffer. They spend so much of money, and those who are doing in private practice, private colleges, they spend a lot of money. They take loans, and once you come back and you have a sword hanging on you, so we thought along with Upchar, and this is a topic which is going to be of immense importance for all of us, how to streamline this, how to get out of this. And for this, we have none other than Dr. Parekh and Dr. Nagpal. As all of those who have heard Dr. Nagpal, he is an excellent orator and who has an in-depth knowledge for this medical legal cases. He has been doing this for all of us. So we welcome both of them, Dr. Parekh and Dr. Nagpal, and all the Upchar team, so that we can set a guideline, and we set a forum through which we can at least approach the government. These are the expectations of doctors. If these are your expectations, these are the expectations for doctors, so that we can streamline the medical services, the charges, so it becomes a lucrative for youngsters to join this line. Thank you very much. Thank you, Dr. Sood. Now I would like to introduce Dr. K.K. Parekh. Though he doesn't need any introduction, he is a great doctor. He has been past president of IMA National, and he is MD, FICP, FRCP from Glasgow.
He's a member of FSCP also. He's senior consultant medicine and he's the director of SN Parik Hospital Research Center in Kota. He is the president-elect, presently at Indian Institute of Clinical Medicine, past president, I told you, API National, past dean, Indian College of Physicians. So next is Dr. K.K. Parik. I told you he is a director, SN Parik Hospital Research Center, Kota again, and is a tremendous academic. He has delivered many prestigious auditions, lectures in national conferences and national as well as international conferences. So I request Dr. Parik. K.K. Parik for his opening remarks for such a wonderful topic. He will guide us how to proceed about this NABH and this thing. So Dr. Parik, sir, please, you have to give opening remarks. Thank you, sir. Thank you, Dr. Jha, for a nice introduction. Dr. R.M. Chabra, stalwart of API and NDPF. Dr. Rakesh Sood, President, NDPF. Dr. Jha, Secretary, NDPF. Dr. Sunil Shetpal, Dr. Raj Shekhar Yadav, Dr. Nagpal and Dr. Suresh Vashisht. They all are chairperson and panelists. Dr. V.K. Gupta is there as a dignitary. So today we have got a very important topic to be discussed, pros and cons of NABH in healthcare services. This is a very important topic and I must compliment and congratulate the NDPF and Upchar. They are really doing a wonderful job by organizing webinars on such an important topic for medical fraternity, which will benefit to a great extent to our physicians, non-academically, but this is this is now, it has become more important than academics. So I again request Upchar and NDPF that they should organize such webinars regularly, almost a minimum once in a month, or they can make it more. If they need platform, we can provide them. I can also provide them. So, but it is very important to aware our physicians about all these things so that we do not go into the court and we are not penalized. So, friends, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You're audible, sir. Because there is some phone is coming. So, NABH, whether it is important or not important, this has to be discussed. I think the cost of treatment increases with NABH. There are a lot of agencies which are doing this job. They are making training the doctors and the hospitals for NABH. They are not, rather, they may not be right agencies for this purpose. The cost is also much more when you get a NABH, and it comes on the patient also. As Dr. Chabra said, the legal problems and working and documentation becomes more. So now there are learned persons and dignitaries who are present today to discuss all about NABH, whether it is important or not important, whether it is to be taken or not to be taken. It is a matter of discussion so that we can come to some conclusion what is the right thing. So thank you very much, Upchar and NDPF, for giving me this opportunity and giving this honor. Thank you very much, Dr. Thank you, Dr. Parik, sir. We are very fortunate. Thank you. I think you remember you had come to our annual conference also in Delhi. Yes, sir. Yes, Sir. So that was a Thank you, sir. Thank you. thing. Now, I will introduce our, sorry for the delay and some technical problem. So now invite Dr. Sunil Khetarpal. He is a very dynamic person. We are working together in our IMA Delhi North Zone. He has been past president of the IMA Delhi. And presently he is the deputy CEO of Park Metro Hospital, Gurugram. He has been into NABH, very deeply into it. He is a principal assessor of NABH, formerly CEO Rajiv Gandhi Cancer Research Center in Rohini. He is MBBS, MHA, PGHM, PGD, MLS, PDMLE, and he has been 33 years experience in healthcare industry. And area of expertise is hospital administration. We also take advice from him in case of any problem.
His hospital administration, quality accreditation, academics and training, medical legal also. And he has been a speaker in various national and international events and conferences. He has been rewarded in a lot of conferences. I am party to that. We have seen this thing. He is experienced in quality assurance. NABH assessor, I already tell, he's a trainer also since 2006. So very vast experience. And he have already conducted assessment of more than 350 hospitals. And awards and recognitions, he's got various prestigious awards, including honorary IMA professor by MA and Visit Chikitsa Ratan Award by Delhi Medical Association, Doctors Day 2018, recently. So I invite Dr. Surya Sarpal, who has been of immense help in understanding what is NABH and how to go about it. So Dr. Yeah. Surya Sarpal, sir, please. Next. Yeah, Right. thank you, Dr. Amin. Jha. Thank you, Dr. Jha, for the kind words of introduction. Thank you. It's Thank an you. honor to be in this among the esteemed. डॉक्टर झा faculty. पहले सबको इंट्रोडक्शन देके फिर चालू Yeah. करके बाद में पैनल डिस्कशन करेंगे. हाँ, ठीक है. Thank you. Thank you. हाँ, बेटर रहेगा. नेक्स्ट. नेक्स्ट नहीं भी तो बोल रहे हैं ना सर, आपने बोलना है कुछ? अच्छा, नहीं सर, बातें पैनल डिस्कशन में करेंगे. पहले सबको अच्छा चलो, हाँ इंट्रोडक्शन दो. ठीक है. पहले चेयरपर्सन का सबको इंट्रोडक्शन दो. ठीक है. कोऑर्डिनेटर का सबको दे दो And इंट्रोडक्शन. our next Dr. Neeraj Nagpal, he doesn't need any introduction. He has been a very crusader as far as this medical faculty is concerned. He is a medical legal consultant. He is MD, FIMS, is a consultant physician, and he is a GI endoscopist also. He is presently chairman and managing trustee Medicos Legal Action Group. Ex-president of IMH Chandigarh State Branch, is a director, Hope Gastrointestinal Diagnostic Clinic Chandigarh, member ASG, ESFG, ISG, INSL, SGI, and fellow of IMSA. He is a member of various boards like Journal of Cutaneous and Surgical Surgery, Journal of Indian Medical Legal Ethics Association, which is a very fond subject for him, I believe, and books also have written and edited also. Compendium of CPA Medical Judgments, Volume 1, 1995, and Volume 2, 2004. And he's got a book chapter, Medical Legal Aspect, Dermatology, Plastic Surgery. He's a writer, RT activist, speaker, he's such a good orator, we know, and we are lucky to have him in our conference also, has contributed a lot in our conference. So next, Chairperson, please, sir. I was already told about Dr. Raj Shekhar. He has writes such a good blogs and this thing, and is a very active person, and he's a physician at the City Hospital, Behror. He's MBS from Ajmer as well as MD from Amazon, but he is a very crusader and he has been wonderfully writing, has got a very deep insight into all the medical legal problems or medical problems which medical field is facing. So Dr. Raj Shekhar, welcome you also. Next. Next, please. Dr. Suresh Vasishtha, a very senior person. He is a senior consultant, general and minimal access surgeon. He is a medical legal advisor also. He has been past national president of Association of Surgeons of India. We have got Parikh, past national president as API. He is from the ESI. He is presently ESI. He is a director of Samvit Hospital, Mangalam Hospital, Gurgaon, and invited faculty in various national and international conferences and workshops. He is a permanent member of Board of Advisors, Institute of Medicine and Law. She is also one of the very good medical legal advisor and will be very benefited by his insights. And next slide, please. Dr. S.K. Arora. He is our own. He is a member of executive member of our North Delhi Physician Forum. He is a senior consultant physician and director of Shalimar Bagh. He is also a Max Hospital, Shalimar Bagh, and a very lovable person and very knowledgeable. Next slide, please. Round next. And now the Dr. Lokesh Kumar Agarwal. He is a senior consultant laparoscopic general and neurosurgery. He is a former surgeon at SMS Hospital Jaipur and GTV Hospital Delhi also. He is a coordinator executive member of Upchar, which is a very renowned organization. He is junior executive IMA Rajasthan State also. He is the director of Raman Hospital Dholpur and member of various organizations like Upchar. He is put in the first. ASI, HS, AMSI, IAGS, LC, IMA, and he is a director of Raman Hospitals. So I welcome Dr. Lokesh Kumar Agarwal also in this webinar. Next. Rahul. Next.
Next, okay, I think to introduce Dr. Aram Chawla, the hero of the day. Oh my God. Bhai Sahab. He is a very educated person. He is MD medicine. He is a FRCP Edinburgh. He has done certified course in diabetes, recognized by BMJ. He is a member of Royal College of Physicians and Fortis CDoc. Presently, senior consultant physician and Director Chawla Medical Center, Pitambura. He was formerly at Fortis as well as Max and Saroj Supervisory Hospital. So now he is become a big crusader as far as the medical legal part is concerned. He is a governing member of API, founder and past president, Knowledge Fisher, already told. He is a past faculty member of Indian ICP, IAPI, past chairman and secretary of API Delhi State Chapter. He is a past treasurer of CSI, state criminal IMA DNZ, and various publications, national and international journals. He is a member editorial advisory board of JAPI also. And a lot of awards like Sundarlal Upati Award from Delhi Association 2005, Distinguished Service Award from WCC PGC in 2008, awarded by Bharat APW Kalam Azad 2008, Sudarshan Guru Award, Delhi Medical Association, Delhi North Zone 2009, and again from the WCC. Bus, next. Next, Okay, sir. Visible? Done, sir, done. Thank you. Thank you, North Delhi Physician Forum and Upchar for giving the opportunity. Dear friends, first of all, I would like to thank my father and preacher who taught me to unite the people and guided me to reach this position. Late Shri Jagdishchandra Chhabda and Dr. R.K. Mitrka, he was a renowned son. Both they have left aboard and I miss them always. So this presentation is exclusively for the education and the motivation purpose. There is no conflict of the interest, any intention to hurt anyone in person, fraternity, government, media, association, or the organization. And what are the sources of this presentation? This presentation is based on many discussions with the office bearer of the various medical association, esteemed IM members, a group of the senior junior doctors, various specialty who wants to restore the same pace and the harmony in the clinical practice to deliver best healthcare services as it was in the 1980s era before the CPA. And we had so many discussions with the various departments of the public too. And this is the outcome of the holistic approach to the discussion, evidence and observation. So what healthcare services are provided by either government or the private sector. Private sectors, the small setup, mediocre setup, and the big private hospitals, and the corporate hospital sectors and the stand-on clinic. These are the places where the health services are provided. So the healthcare services were so good and acceptable when our profession was considered as a noble one. And when there was no political interference in the healthcare services, and when there was no Google Baba's advice or the guidance, and no businessman or the corporate involvement interfere in the treatment or the healthcare system, and there was no Consumer Protection Act or the CEA and the healthcare services, and people were satisfied with the available or the provided treatment offered to them with the available resources and the infrastructure. So why the healthcare system, services are dented or the weak in current era? What are the reason? Google and media made the various treatment options available to the people with the advertisement or even in the online by the quacks. And there is a lack of the infrastructure and the modern equipments in the hospital, and disease are managed by the non-medical bureaucrats, non-medical or the bureaucrats or politician even. So see the structure, how they manage. There is a graph. There is increasing the webinar and the corona cases are increasing, or the earning of the everyone is going down. But bureaucrats and officials are missing from this management graph. Why? Because they are not accountable and getting the full salary. They are getting the full salary without any knowledge of the things. They are managing, or they were and managing the show with the zero knowledge of the COVID-19. So medical fraternity was and is helpless due to the dominancy of the non-medical. This is the problem with us. So it was a very matter of the concern and painful when the real doctors were and are not allowed to apply their expertise. This is the problem why our health system is weak. So as per a survey, we have asked the many people what you want the treatment from, where you want the treatment. The result, expected treatment option by the patient and their relatives
only well-equipped, highly rated, and high-tech hospital. They want the treatment from these. Everyone expects the advance or the high treatment, either of the free of the cost or the charitable base or with the help of the government or Neta or the trustee. What will happen? What is the truth? Truth, it is not possible at all to deliver with this cost. So only one dialogue is left with the doctor लुटेरे हैं. बाकी कोई लुटेरा नहीं, doctor लुटेरे हैं. So dear friends, have you ever thought who are the sufferer? Only with this system, only doctors, patient, and their attendant. Another one, I will add the taxpayer. They are also sufferer because everything goes into the taxpayer. So another miscreants compel the people to go against the modern medicine, but they avail the modern medicine once they become the sick as per survey. Have you seen any bureaucrat or anything? They will come to the allopathy, but they compel the people go against this medicine. So at the same time, people want the high-tech treatment with the high-rated hospital. And Google, digital media have made everyone a doctor, especially in the India. What is the other problem? Over expectation of the outcome of the treatment, irrespective of the disease and the stage of the disease at which the patient is get admitted. Another big problem, private-public partnership model of the healthcare system that made the deterioration of healthcare system. Another is the frequent violence and the assault incidents. Most of the time, it is very concerning. Another is the doctor are dragged to court with the baseless and the petty reason for the medical error that will be converted to the negligence. This is the problem. Today, overburden of the rules and regulation. So one of the NABH we will discuss, NABH today. We will discuss one by one. All will lead to the deterioration of the inadequate healthcare system. So these are the 72 rules. You see, 72 rules. What will happen if there is a 72 rule laws and regulation? That creates a Baburaj or it will create either corruption or the violence. Definitely corruption will be there. If the more laws are there, corruption will be there. So always sword hanging on the doctor. So under regulation or over regulation, plethora of the law regulation that will lead to the deterioration of the healthcare system. So it remains always questionable. What is this is the scenario? This scenario, this small hospital, what will happen? Everybody, CPA, public fire, wireless, cashless. These are the things, NBH. These are the things that made the healthcare system very poor. So today I will give the question to the panelists or the coordinators. Question to the Dr. Rajshekhar. Why the NABH, when all the formalities are at the time of the registration are completed, why the NABH again? So Dr. Raj, please. बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर छाबड़ा. सबसे पहले तो मैं एनडीपीएफ को थैंक यू कहना चाहूंगा कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने एक डिस्कशन रखा है. सेकेंडली, मैं आज विमेंस डे है, मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहूंगा. हेल्थ केयर में महिलाओं का जितना योगदान है उतना शायद किसी और सेक्टर में नहीं होगा. तो इंटरनेशनल विमेन डे पे मैं सभी फीमेल डॉक्टर्स, फीमेल नर्सेज, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को नमन करना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से हेल्थ केयर सर्विसेज इतनी अच्छी हुई है. आपने आज का जो टॉपिक रखा है NABH, ये बिल्कुल एक हॉट टॉपिक है. हेल्थ केयर ऑलरेडी ओवर रेगुलेटेड है सर. जैसा भी आपने बताया कि 72 कानून ऑलरेडी हम पे लागू होते हैं. नेशनल मेडिकल कमीशन है जो कि ये तय करता है कि डॉक्टर्स के काम की क्वालिटी कैसी है, वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं है. क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, फायर एंड सेफ्टी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, फिर CMH ऑफिस है, MTP रूल्स है, AERB रेडिएशन का ध्यान रखता है. तो जब इतना सब कुछ ऑलरेडी था तो हमारे को NABH की आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे पड़ी, ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा. NABH का जब कंसेप्ट हिंदुस्तान में लाया गया था, ये बेसिकली जो मेडिकल टूरिज्म जो हॉस्पिटल कैटर करते थे, सर्व करते थे ओवरसीज पेशेंट्स को, उनकी क्वालिटी को वो बाहर के लोग सही से जज कर पाए, उसके लिए बेसिकली लाया गया था. और उन हॉस्पिटल्स के लिए किसी हद तक सही भी था क्योंकि उनके चार्जेस उसी प्रोपोर्शन में होते थे. मेडिकल, एक कोई विदेशी पेशेंट आता है और उसे आप ठीक ठाक चार्ज करते हो तो आप वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है वो दे सकते हो. लेकिन आप उसी क्वालिटी को छोटे अस्पतालों पे जो गांव के मरीजों को सर्व करते हैं, जो मध्यम दर्जे के जो मरीज हैं उनको सर्व करते हैं, उन पे यदि थोपोगे
तो यूएसए के जो क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स हैं वो सोमालिया या बांग्लादेश के रेट्स में संभव नहीं है। यदि आपको क्वालिटी चाहिए तो अफोर्डेबल पेशेंट भी होना चाहिए हमारे पास। जब हम बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो दोनों में जो क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। गुड्स की जो क्वालिटी है वो जज करना बिल्कुल आसान काम है। गूगल ने तो अब इसको बिल्कुल आसान कर दिया है। आप 10 मिनट में एयर कंडीशन खरीदना है तो उसकी क्वालिटी को आप गूगल पे जज कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज की क्वालिटी को जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसमें भी जो हेल्थ केयर की क्वालिटी है उसको जज करना तो बहुत मुश्किल होता है। आज हम यदि अपने ऊपर देखें और हम हमारे को अपने अपने किसी बिलव्ड के लिए हॉस्पिटल ढूंढना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एक तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसके पास कितना एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर फील्ड का। दूसरा हम देखेंगे कि हॉस्पिटल की जो वर्किंग स्टाइल है वो कितनी एथिकल है, कितना भरोसे के लायक है। और तीसरा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट तो आजकल कैशलेस की वजह से ये विषय तो गौण हो गया है, लेकिन बाकी जो दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको अभी भी मरीज देखता है। NABH या ऐसा कोई भी एक्रेडिशन प्रोग्राम है उसमें इन दोनों पैरामीटर्स को जज करने का कोई एलिमेंट मुझे दिखाई नहीं दिया। हॉस्पिटल कितना एथिकल है या डॉक्टर के पास कितना एक्सपीरियंस है इसको NABH में जज नहीं किया जाता। आज हम अपने आसपास देखेंगे तो बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनकी जो कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है वो विश्वास के लायक नहीं है। तो क्या हम ऐसे अस्पतालों में मरीज को भेज के ये एश्योर कर सकते हैं कि आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल रहा है? यदि एथिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या हम उसको क्वालिटी ट्रीटमेंट कह सकते हैं? तो निश्चित रूप से आज हमारे को एक बार विचार करने की जरूरत है कि हमें NABH प्रोग्राम्स, NABH जैसे जितने भी एक्रेडिशन प्रोग्राम्स हैं उनकी जरूरत है या नहीं। 2015 में डेनमार्क जैसे देश ने अपने देश से एक्रेडिशन प्रोग्राम्स को सिर्फ इसलिए बाहर किया क्योंकि इसको लागू करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि जो पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच थी उसके बजाय जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनका बहुत सा समय डॉक्यूमेंटेशन में, पेपर वर्क में जाया हो रहा था। और उन्होंने वापस इन प्रोग्राम्स को अपने सिस्टम से रिमूव किया ताकि जो अप्रोच है वो पेशेंट सेंट्रिक हो सके। तो आज हमारे को भी ये रिव्यू करना पड़ेगा कि स्पेशली जो स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं, मीडियम साइज हॉस्पिटल्स हैं, इनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, वो क्या इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसको समझने के लिए आपको एजेंसी की जरूरत पड़े तो वो कितना प्रैक्टिकल होगा। जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इसकी वजह से इंक्रीज होगी उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगे ये हमारे को समझना होगा। थैंक यू डॉक्टर छाबड़ा। Thank you. You mean this program is not for the India where the infrastructure is already less? बिल्कुल सर। Okay, एक मिनट क्या कर दिया यार, क्या गड़बड़ हो गई है यार। Yes. Next question to the Dr. Sunil Khetrapal. Will one-time inspection can assess the quality of the healthcare services and the norms of the NABH? Dr. Sunil Khetrapal. Yes, Dr. Chavra. It's a very, very valid question which you have asked. See, there is a whole process for the NABH assessment. Nowadays, the NABH has become totally, online, and the hospital has to upload their policy documents beforehand, before the assessment is scheduled, so that the assessors can go through their policy documents and they have fair idea about, where do they stand, what are they, how they have documented their policies and procedures. So this is one thing. Secondly, the assessor, the principal assessor will ask for the floor plan or the floor directory of the hospital. And they would like to know that in which floor, what all are areas are there where the assessor has to go and do the assessment. So the areas are divided among the assessors. There is a team of assessors which goes to the hospital. So it is, and also there are two stages of NABH assessment. One is a pre-assessment, like you have a pre-test or unit test, you can say, or final assessment is a second stage. So then it is not, also the man days are divided. Man days are decided as per the size of the hospital, so that you cover all the areas and all the standards are covered. And all the team of assessors, they visit all the areas
and they do the assessment as per the assessment schedule and the areas assigned to the each assessor. And then whatever, because they already have gone through the documents, most of the documents they have gone through beforehand, before they go on site for the assessment, and they know where do they stand. And again, Dr. Khetrapal, I have seen one or two hospitals, when the team is about to come, they set up all the scene as in the picture, they set up all the things. But once the inspection is over, they come to the same situation as they were. This is the problem. Once you are inspecting the things, everything is in order. But once you inspected that place, everything is disturbed same time. I have noticed many times. What is the solution of this? No, I did not get you your point actually, what you want to convey. Yeah. नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं मेरे को? I did not get your मैं point. ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने मेरे को बता दिया कि आपके हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन होना है, तो जैसे पिक्चरों में सेट करते हैं ना, अपना सीन सेट करने के लिए सारा स्टेज लगा देते हैं, और जैसे इंस्पेक्शन करती है एवरीथिंग इज नॉट इन द ऑर्डर. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिस इज वेरी ट्रू. हाँ, वो आप ठीक कह रहे हैं, बिकॉज अब क्या है कि स्टाफ की जो ट्रेनिंग होती है, हम बिकॉज वी असेसमेंट का जो प्रोसेस होता है, वी रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स, वी विजिट द एरियाज, वी इंटरव्यू द स्टाफ, वी कंडक्ट द मॉक ड्रिल्स. जब हम स्टाफ से बात करते हैं, स्टाफ समटाइम दे आर नॉट अवेयर, स्टाफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसेस कि क्या करना है. तो इसीलिए जो ऑन साइट जो रियल पिक्चर इज, यू नो, ग्राउंड रियलिटी इज सीन ओनली व्हेन यू आर ऑन साइट एंड कंडक्टिंग द असेसमेंट. And every staff, you know, is not trained accordingly. Dr. Khetrapal, I will ask you another way. I will ask you one question. Yeah. Are you agree one visit is more than sufficient, or you require 2 or 3 visits, 2 or the surprise visits? So, as I mentioned that it is done in 2 stages, pre-assessment. So depending upon the size of the hospital, for 100 beds, they are, say, you can say 6 man days. 3 assessors will go for 2 days, or 2 assessors will go for 3 days. So between 100 and 300 beds, it is 9 man days. And then between 300 and 500, it is 12 man days. And I have conducted an assessment of a medical college. There were 4 assessors for 4 days. So you mean the size of the hospital was more than 500. And this is a pre-assessment stage. उसमें भी आपको NC close होने के बाद भी फिर final assessment दोबारा होता है. तो assessment तो है. Okay. You mean it requires multiple visits? Yeah, it requires multiple, but not more than 2 visits. Okay. Now next question to the Dr. Suresh Vasista. Dr. Vasista is there? Dr. Suresh? Sir, I am there. Dr. Suresh? Yes, sir. हाँ जी, आगे शक्ल बड़ी अच्छी दिखी आपकी शक्ल. The pros of the NABH. Advantage. Light. Thank you very much, sir. सबसे पहले तो मैं एक शिकायत करूंगा जी कि आपने मेरी इच्छाओं के विरुद्ध मेरे को ऐसे कैंप में डाल दिया जिस कैंप में मैं कभी रहा ही नहीं. और दूसरी शिकायत ये करूंगा कि आपने मुझे क्वेश्चंस नहीं भेजे. तो सबको भेजे मैंने. और तीसरा मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि फिर भी मुझे आपने अपने साथ रखा. ये आपकी बड़ी अनुकंपा है मेरे ऊपर, आपका प्यार है, इसके लिए मैं बहुत आपका हृदय से आभारी हूँ. प्रॉब्लम हमारी क्या है कि वी डोंट फॉलो अवर कल्चर. हमारी संस्कृति है वो ये है, अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम एकस्थम तद्भुन्नारी व्याप्त लोकत्रयम तिषा. यानी सभी देवताओं से उत्पन्न हुआ और तीनों लोकों में व्याप्त वो अतुल्य तेज, जब उसका समावेश हुआ, जब वो एकत्रित हुआ, तब वो नारी बना. और वो नारी हमारी संस्कृति में प्रत्येक दिन हमारा महिला दिवस है, नारी दिवस को समर्पित है. जब से हम पैदा होते हैं, जब से हम सुबह उठते हैं, हमारी हर क्रियाकलाप में नारी का एक रोल है. लेकिन एक इंटरनेशनल विमेंस डे आ गया, जब हम उसको याद कर लेते हैं, कुछ लोगों को हम अवार्ड्स दे देते हैं, अस्पताल के प्रमोशंस कर देते हैं. ये हमारी समस्या है. दूसरी बात जो है, आपने डॉक्टर क्षेत्रपाल से जो पूछी थी कि इंडिया के लिए NABH की जरूरत नहीं है, यही हम मात खा जाते हैं. वी आर ए मिक्स ऑफ वी आर सो डाइवर्स. हम इंडिया भी हैं, हम भारत भी हैं. इंडिया के लिए आवश्यक है NABH की,
भारत के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि 80% तो भारत है। तो ये जो मैंडेटरी किया हुआ है तो फर्क करना पड़ेगा, वो क्यों किया हुआ है। एक अकेले सर्जन के नर्सिंग होम में उसे पता है कि मेरे पास ये सूचर है, मेरे पास ये ड्रेन है ओटी में, मेरे पास ये चीज है। उनका एक स्टाफ है जो पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है। प्रॉब्लम आती है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, जहां पे शिफ्ट में काम हो रहा है। एक लड़का है वो ओटी में आया, वो बीच में से निकल गया, दूसरा आया, तो वहां पे देयर हैज टू बी ए सेट प्रोटोकॉल, देयर हैज टू बी ए सेट लिस्ट। Second thing, quality and safety cannot be imposed. It is a habit which a person, a medicos, learns right from his admission to medical school. तो ये कुछ ऐसी असमानताएं हैं और ऐसी कुछ डाइकोटोमीज हैं जिनको लेकर के हम खुद कंफ्यूज्ड हैं। एनएबीएच एक थर्ड पार्टी एसेसर बन गया। क्वालिटी कंट्रोल, देखो आपने मुझे प्रोस का कहा है, तो प्रोस तो ये है कि क्वालिटी कैनॉट बी डिनाइड, सेफ्टी कैनॉट बी अवॉइडेड, इट हैज टू बी एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हेल्थ केयर। Who denies that there should be no quality? But the issue is that who will certify the quality? That we have said कि भाई ये अब इसके लिए ना रिहर्सल होती है। जैसे आपने पूछा जी, आपका एक्रेडिटेशन होने से पहले एक रिहर्सल होती है, ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग वैसी होती है जैसे नर्सरी में बच्चे को एडमिशन के लिए माँ बाप ले जाते हैं, उसको पोएम रटवा देते हैं 10, जैक एंड जिल वेंट ऑन ए हिल, है ना, इस तरह से वो याद करवा के रटवा देते हैं, फिर वो पीछे से प्रॉम्प्ट करते हैं, ये बोलो ये बोलो। इट इज लाइक दैट। वो ट्रेंड स्टाफ आता है, हायर पे आता है, अब हम उसको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। उस सर्टिफिकेट के लिए सब लोग क्यों भाग रहे हैं, हर अस्पताल क्यों भाग रहा है, उसकी एक मजबूरी है। बिकॉज नाउ दोज हॉस्पिटल्स हु हैव दिस एक्रेडिटेशन विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस, will it has been made mandatory by IRDA। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनका हमको एक समेकित सोल्यूशन, एक समेकित समाधान ढूंढना पड़ेगा। प्रोस तो हैं, लेकिन वो प्रोस एनएबीएच के नहीं है। दैट इज ए पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। वी ऑलवेज स्टिक टू द क्वालिटी, वी प्रोवाइड क्वालिटी केयर एज राजशेखर हैज मेंशन्ड, और उसके बेस पे ही हमारी सारी हेल्थ केयर है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या हो गया है कि नाउ पहले पेशेंट होता था कन्हैया, अब वो कन्हैया नहीं। 10 बेड नंबर पे आईसीयू पे जो पेशेंट है वो हो गया, उसके टैग बन गया, उसके एक निशानी बन गई है। सिंपैथी थी, पर्सनल बॉन्डिंग थी, दैट इज लॉस्ट। ये हम टैग वाली संस्कृति में जा रहे हैं, कन्हैया वाली संस्कृति से। लेट अस बी कन्हैया वाले से वापस आए। यू वांट अच्छा है, लेकिन इसको रिफॉर्म करना चाहिए, इसके कुछ चेंज करना चाहिए इसको। नहीं, अच्छा नहीं है, क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन वो सर्टिफिकेशन वही क्यों, व्हाई इट इज मैंडेटरी। विदाउट क्वालिटी व्हाई यू आर ओपनिंग अ हॉस्पिटल। Yes, good. You are right. Thank you very much, डॉक्टर सुरेश। आपने अच्छा एनलाइट किया। अब मैं आता हूँ डॉक्टर नीरज नागपाल, लर्नड पर्सन, मेडिकल also. And Dr. Neeraj Nagpal, tell us about the cons of the NABH. तो एक तो आई एम अपसेट, आपने मुझे डॉक्टर सुरेश वशिष्ठ के बाद बुलाया, बिकॉज वो बोलने की शैली है उसको मात करना पॉसिबल नहीं है। Even though the topic given to me is stronger than the topic given to him, but the point is the sequence is such that I feel afraid speaking after him. So the thing is, what we need to realize is, some speakers have mentioned that documentation is becoming a problem. Please remember, NABH may be prescribing documentation, but even without NABH, the documentation of today is part and parcel of medical practice. This is as per the Consumer Protection Act, as per the litigations which are happening against us, which will happen with or without NABH. So can we blame NABH for the increased documentation we are doing today? I think that is a separate issue. This is a separate issue. What is the problem with NABH? Basically, government does not spend on healthcare. When the government does not spend on healthcare, its public sector facilities go downhill. Now, to answer to the public, what are you doing? They have roped in the private sector healthcare providers, which were 60 to 70 or nearly 75% of the healthcare providers in the country. And they have been brought under, first it was Clinical Establishment Act.
then through NABH and through insurance, now they have taken total control over the working of private hospitals. This total control, which has been taken over by the government, is what is causing the majority of the problems. The compliances which have come in. This is absolutely right that a doctor today is focused on the compliances rather than patient care. There is definitely increased cost of treatment. Why will increased cost of treatment not be there? There are insurers, there is advisors, there is consultants, there is facilitators, there is aggregators. Doctor just now said about the inspections which happen. Now you are going for the inspection, and before inspection, you are wanting the doctors to upload the documents which you have asked for. Can I know truthfully who among the hospital owners, I have been a hospital owner, prepares those documents? We do not prepare those documents. We hire consultants, and it is the consultant who's uploading those documents for us. So every policy document which is being uploaded is being dictated or is being typed totally independent of the hospital which is being assessed. Then the doctor-patient relationship definitely has taken a hit. The increased litigation, increased avenues to litigate against or harass doctors have come in through NABH. I will take this issue later on. But what has happened is there is now a decreased financial viability for the small and medium healthcare establishments because of these compliances. You want modular OT, you want HEPA filters, you want everything, fine. But everything costs money. There are no free lunches in the world. You want to bring in standards of US into India. In US, 5 minutes after rain, the roads will be found to be clear. In India, 5 minutes after rain, the roads will disappear. You will not find the road. So how can you bring in standards from US and take them to India? We used to treat the patient used to pay us. Today, the patient pays for the doctor, for the medicines, for the insurer, for the advisor, for the consultant, for the facilitator, for the aggregator. So obviously, it is going to cost more to him. And this is what NABH is bringing in because of these compliances which have been forced. And this was absolutely rightly said by Dr. Rajshekhar. It was a brilliant observation that the NABH was important where medical tourism was concerned. Yes, I 100% agree. Okay, thank you. Thank you, Dr. Neeraj. Very nice. But आपकी complaint भी है, सुरेश की complaint आए तो मैं फंस गया, सबकी complaint ही सुन रहा हूँ. Now my question to the Lokesh Agarwal. Lokesh Agarwal. जी sir. Does the NABH announce the bureaucracy and the Babu Raj? What is your opinion? जी. वैसे तो सर सबने सब कुछ बता ही दिया है. फिर भी पर्सनली मुझे लगता है कि जो NABH है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के लिए तो ठीक है, लेकिन जो सिंगल स्पेशलिटी या कपल जो लोग छोटे नर्सिंग होम्स चला रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है. और हम खुद ही इनवाइट करते जा रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स. एक जमाना था जब ब्यूरोक्रेट्स और बाबूज का हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर चीज में ब्यूरोक्रेट्स और बाबूराज हावी होते जा रहे हैं, हर छोटी से छोटी चीज पे. तो जब हम अपने लिए इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेंगे और अगर उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो बट ऑब्वियस है, नेचुरली है कि वो लोग आके हमारी गलतियां निकालेंगे और हमको कहीं ना कहीं उस चीज के लिए पेनलाइज होना पड़ेगा या रिश्वत खिलानी पड़ेगी. तो मुझे लगता है कि सर ये बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस को इन्वाइट करने वाली चीज है. और रही बात क्वालिटी की, तो हम लोग MS करके MBBS करके आ रहे हैं. एक बाबू या एक कोई अफसर हमें कैसे सिखा सकता है कि हमारी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? ये तो हमारा खुद का कॉन्शियस है. मैं पेशेंट से पैसे ले रहा हूं तो ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे उसको क्वालिटी देनी है. इसमें कोई तीसरा आदमी कैसे बताएगा मुझे कि आपकी क्वालिटी नहीं? मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे सफाई रखनी है, मुझे नहीं पता मेरे पास एफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए. ये आदमी हमें बाबू और ब्यूरोक्रेट्स थोड़ी सिखाएंगे. तो मेरे को तो लगता है सर बिल्कुल यूजलेस चीज है. हाँ, कोई स्टैंडर्ड नॉर्म्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन उसकी भी कैटेगराइजेशन होनी चाहिए. अब 7 स्टार होटल और 2 स्टार होटल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेम नहीं हो सकते. उसी प्रकार 10 बेड के हॉस्पिटल के लिए और 500 बेड के हॉस्पिटल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेम नहीं हो सकते. पर गवर्नमेंट बैकडोर से सर गवर्नमेंट की, जैसे अब IRDA ने मैंडेटरी कर दिया तो हर आदमी इसके पीछे पागल है क्योंकि उनका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है. तो कहीं ना कहीं हमारी सारी एसोसिएशंस को मिलके इस चीज का कोई रीजनेबल सॉल्यूशन खोजना चाहिए. थैंक यू. ओके, थैंक यू. बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए.
जैसे डॉक्टर नीतिन ने बताया, डॉक्टर राजशेखर ने बताया, ये जितने टूरिज्म के ट्रीटमेंट के लिए ये NABH इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंडियन कल्चर के लिए हमारे छोटे छोटे नर्सिंग होम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एम आई राइट डॉक्टर नीरज? एम आई राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। टू द डॉक्टर राजशेखर. डॉक्टर राजशेखर इज देयर? डॉक्टर, yes sir. what is your opinion about the one time and the one window licenses to the NABH or the hospital management establishment? What is your बिल्कुल वन one विंडो time and one window, as our honorable Prime Minister said, one window is बिल्कुल a businessman and all that. What is your opinion about this? वन विंडो होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल एक कोई ऐसा पोर्टल होना चाहिए जिसमें कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जब हॉस्पिटल अपना एस्टेब्लिश करना चाहता है तो बहुत स्मूथली उसको कर पाए। लेकिन वन टाइम मैं अग्री नहीं करूंगा, क्योंकि रेगुलर मॉनिटरिंग भी जरूरी है, लेकिन इतना फ्रीक्वेंट भी नहीं होना चाहिए कि फायर एंड सेफ्टी की तरह आपको हर साल उसके लिए लाइसेंस को रिन्यूअल करना पड़े। मिनिमम 5 इयर्स या 10 इयर्स का एक रेगुलर इंटरवल होना चाहिए। हर साल जब हम फायर एंड सेफ्टी के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले साल का अभी लाइसेंस आया नहीं है और अगले साल की डेट आ जाती है। इतना फ्रीक्वेंटली भी नहीं होना चाहिए, कम से कम 5 साल का तो जरूर होना चाहिए। और सारे जो लाइसेंसेस की प्रक्रिया है वो फेसलेस होनी चाहिए। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उन्होंने फेसलेस किया है कि कोई लोकल जो इंस्पेक्टर है या अथॉरिटी आपको कांटेक्ट नहीं कर सकती। ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप ऑनलाइन अपने पेपर को सबमिट कर सकें। उनको यदि कोई इंस्पेक्शन करना है तो ऑनलाइन कर ले, लेकिन वो सारा बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जो इंस्पेक्टर और जिस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन हो रहा है उनके बीच में कोई किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। बाबू बीच में नहीं होना चाहिए, बाबू राज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और केवल ये जो डिजिटलाइजेशन है या जो टेक्नोलॉजी है, इसका एक अच्छा प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। आज इतने ज्यादा इंस्पेक्शंस होते हैं, इतने ज्यादा एजेंसीज हमारे पीछे हैं कि वो करप्शन बढ़ता है और अल्टीमेटली उसका जो बर्डन है वो एंड यूजर यानी पेशेंट पे आना है सर। उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हॉस्पिटल को अपनी जेब से नहीं भरेगा, कोई ओवरहेड खर्चे हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनको फिर इसी वजह से फिर करप्शन आता है। अननेसेसरी प्रोसीजर्स भी इसीलिए होते हैं। आज कैशलेस हेल्थ केयर की यदि बात करते हैं तो एम्पेनलमेंट का जो प्रोसेस होता है वहीं से करप्शन शुरू हो जाता है सर। आप एम्पेनलमेंट के लिए जब कोशिश करते हो तो वहीं से आपको ब्राइब देके एंटर करना पड़ता है और फिर वो सारा फिर वो एक चेन रिएक्शन विशियस साइकिल शुरू हो जाती है। और जो एथिकल और ऑनेस्ट डॉक्टर्स हैं वो भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और उसका अल्टीमेट जो भुक्तभोगी है सर वो पेशेंट है। अननेसेसरी कोई प्रोसीजर यदि किसी पेशेंट को हो रहा है या अननेसेसरी उसका स्टे बढ़ रहा है हॉस्पिटल में, वो तो कंज्यूमर पड़ेगा सब कुछ, कहीं ना कहीं वो पेशेंट को भुगतना पड़ रहा है। तो इन सब चीजों का कोई भी लाइसेंस है या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन होती है उसकी कॉस्ट है और किसी ना किसी को तो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। नाउ थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजेश, बड़ी अच्छी चीजें बताई। वन विंडो इज बेटर, अगर हो जाए तो बेटर रहेगा, लेकिन हाँ लाइसेंस का है, कोई गैप ज्यादा होना चाहिए, एवरी ईयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। एंड नाउ आई विल कम टू द डॉक्टर सुनील खेतरपाल। डॉक्टर सुनील खेतरपाल, डॉक्टर खेतरपाल प्लीज, इज देयर? Yes, Dr. Chabra. Yes. How does the NABH differ from the ISO? Previously, there is ISO 9001 quality and lab के लिए 70,005. There are so many ISO standard for the lab and all that. How does it differ from the NABH? Differ from the ISO standard? Yeah, the basic difference is that ISO standards are very generic standards. They are for all the industries, for all the sectors. Yeah. Even a pawn shop or any shop can get an ISO certification. Even the hospital, the standards were same. They were very general, very generic. But NABH standards are specific for the healthcare industry, and they are tailor-made. And these standards were made, derived from the JCI international standard. Also, some of the components of ISO are derived for the NABH standards. So basic thing is it is very generic, and this is international standard. ISO is international and NABH is national standard, and it is propagated by the Quality Council of India. Whereas ISO is international, this is national, and that is generic, and this is specific for healthcare industry. It is specific for the healthcare system. Thank you very much. Specific for hospitals. Thank you very much. हमारे साथ डॉक्टर एस के अरोड़ा जुड़ गए हैं। डॉक्टर एस के अरोड़ा प्लीज, वेलकम। डॉक्टर एस के अरोड़ा, डॉक्टर एस के अरोड़ा, डॉक्टर एस के अरोड़ा, आगे। हाँ जी अरोड़ा साहब नमस्ते, वेलकम।
अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। डॉक्टर अरोड़ा अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। राहुल जी अनम्यूट कर दीजिए अरोड़ा जी को। जब तक अरोड़ा जी अनम्यूट होते हैं, एक छोटी सी मैं बात बता देता हूँ अब बताइए सर। कि ISO सर्टिफिकेट आजकल 3,500 रुपए में मिल रहा है। अच्छा, तो ये उस हिसाब से थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, NABH के लिए काफी महंगा पड़ता है। और एक डॉक्टर अरोड़ा, कौन जो आपने बताया थे वो मेरे को याद आ गया। इट हैज हेल्प्ड इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि काफी लोग जो आ गए हैं, जो बीच के जो फैसिलिटेटर्स, उनकी अच्छी कमाई इसमें हो रही। तो इट हैज NABH हैज डन वन गुड थिंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज। अच्छा चलो, जब तक अरोड़ा जी आते हैं, अरोड़ा जी अनम्यूट नहीं कर पाए, आई थिंक डॉक्टर अरोड़ा अनम्यूट नहीं कर पाए। नाउ आई आस्क द डॉक्टर सुरेश। जी सर। हाँ बताइए, डज NABH इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट और द इंसिडेंस ऑफ द वायलेंस? डेफिनेटली, डेफिनेटली, इंसिडेंस ऑफ वायलेंस एंड द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। no doubt about it, no doubt about it. See, treatment cost, as Rajsekhar has just mentioned, everything, it translates into money. So those modifications in your hospital, akin to 5-star or 7-star hospitals, you need to spend more, and who will pay for it? So economically, जो viability की बात डॉक्टर नागपाल ने भी कही थी, the reason is this, because you have to spend more, then you will expect more and you will charge more. So definitely. अच्छा, उसको मैं राहुल को कहता हूँ करेगा। दूसरा क्या पूछा था आपने? दूसरा वायलेंस, वायलेंस वायलेंस तो देखो, ये NABH का कोई नहीं है, तो एक जेनरिक फिनोमेनन है, डॉक्टर हैं पिटने के लिए ही। अच्छा अच्छा, क्यों चलो। नहीं, NABH की जरूरत क्यों पड़ी सर? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आपको। there is a saying that successful people do not do different things, they do things differently. पहली बात। अब इसका ही एक फर्दर डेरिवेशन ये है कि एवरीवन वांट टू बिकम सक्सेसफुल। अब जो ये जो सक्सेसफुल की सक्सेस का मेजर है, उस सक्सेस के चक्कर में हम अपने आप को इतना ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं दैट आई शो डॉक्टर RM छाबड़ा तो मेरे सामने कुछ नहीं है, ये डॉक्टर राजशेखर के सामने कुछ नहीं है। उस चक्कर में हम एक दूसरे को एंटागोनाइज करना शुरू कर देते हैं, यूनिटी ध्वस्त हो जाती है, और जब यूनिटी नहीं रहती तो हम पिटने के काबिल होते हैं। थैंक यू सर। जैसे मतलब उस वायलेंस से कुछ लेना देना नहीं इसका। अच्छा डॉक्टर नीरज, आई विल कम टू यू। And does the NABH enhance the chances of the litigations? Have you observed before the NABH and after NABH? What is the difference? I'll give you examples. The point is, हमारे पास NABH लाने से पहले जो सिस्टम इंडिया में चल रहा था स्मॉल एंड मीडियम हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स का, किसी के पास कोई डाटा नहीं है कि उस सिस्टम से कॉम्प्लिकेशन रेट, मोर्टेलिटी क्या थी क्या नहीं थी, और क्या जो JCI एक्रेडिटेड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आए उनमें मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, कॉम्प्लिकेशन रेट, इन्फेक्शन रेट, does it guarantee that if I get operated in a JCI accredited hospital I will not get hospital acquired infection? किसी ने एक बेसिक मुद्दे को उठाया ही नहीं है। बिना उस चीज को देखे, बिना उसकी जरूरत को समझे हम सीधा छलांग मार गए हैं into this thing. As regards the litigation, there was a case against Alchemist Hospital. Colonoscopy बंदे ने की, colonoscopy करने के बाद perforation हो गई, patient had some other complications and died also. Now this gentleman not only filed a police complaint, he not only filed a case in consumer courts, he also filed a complaint in NABH. Now please understand, in NABH he is filing a complaint कि how have you certified this hospital as quality for quality parameters where this kind of problem is occurring. So we already have 4 or 5 venues where we have litigated against simultaneously. This is another venue which has been created. Then there was one very important case of State Consumer Dispute Redressal Commission West Bengal against Birla Heart Research Center.
in which the main issue was that you have advertised yourself to be the first NABH accredited hospital in the country. Okay. And you are providing services which are so negligent. And in the advertisement, you are mentioning that it is through the Department or the Ministry of Health and Family Welfare. So based on a false advertising, unfair trade practice, the hospital was penalized 5 lakh rupees at that time. Similarly, this in the case in Gujarat, a patient had undergone a CABG operation and the patient died after that. Again, complaint was also marked to NABH, and NABH conducted its own investigation and gave its findings. So what I'm trying to say is, we already have around 9 places where a patient files a complaint today against a doctor. This does not include to the complaint which is filed to the Chief Minister or a complaint which is filed to the Prime Minister directly. To the NABH, this becomes another avenue to harass the doctor. The doctor has to defend himself in all the fora. So there is umpteen number of reasons why NABH increases litigation and increases the legal problems for doctors. Okay. Thank you very much, Dr. नीरज. बहुत अच्छा कुछ बताया आपने. अल्टीमेटली यही है कि इसके प्रोस भी कौन है, लेकिन कौन ज्यादा है, प्रोस मेरे ख्याल कम है. कि जब तक ये ट्रैवलिंग के जितने भी टूरिज्म का ट्रीटमेंट है उसके लिए बेटर है, जब तक हम अपनी क्वालिटी सुधारने के लिए ये अपने बाबू या ये सर जो आते हैं वो हमारे को नहीं समझा पाएंगे जो हम अपने समझ पाएंगे. नहीं सर, इवन आप टूरिज्म की बात करिए, टूरिज्म के लिए एक्रेडिटेशन NABH की क्यों जरूरी थी? JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल बनाओ, किसने रोका? अच्छा, Why did you need NABH at all? NABH तो जितने भी असेसर आते हैं, असेसर कई बार तो RMO होते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर असेसर बना देते हैं. वो व्हाट इज दिस? सर मैं वही तो कह रहा हूं कि हमें NABH चाहिए क्यों था? अगर मेडिकल टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट था तो JCI एक्रेडिटेशन इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन वर्ल्ड वाइड. Why did we need NABH? Unnecessarily हमने फोर्स किया है डॉक्टर्स को, हर तरीके से आर्म ट्विस्ट किया है टू फॉलो दिस, और उसका रीजन यही है कि ये फॉलो करने के चक्कर में डॉक्टर्स फॉल अंडर द आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स. The entire government control is there and government can say very clearly कि हाँ जी आपका अगर इलाज ठीक नहीं हो रहा हम हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन काट देंगे, हम उसकी इंश्योरेंस से वो एलिजिबिलिटी हटवा देंगे. I mean this is arm twisting, nothing else. अच्छा डॉक्टर राजेश, आपसे क्वेश्चन है, पूछा है कि जैसे आपने देखा कि जो NABH हॉस्पिटल है बहुत ही परसेंटेज कम है, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका क्या करते हैं ये लोग? हाउ दे इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ दैट? If they say कि quality is improved by the NABH, what about those they are not registered? Similarly, the person who is not paying the tax, not accountable, but only registered doctors are account, but the tax are not. What is the? How can you give this answer of this question, Dr. Raj? सर मैं क्वेश्चन को समझा नहीं, एक बार आप मुझे दोबारा क्वेश्चन ऐसा है कि देखो राज जी कहते हैं कि क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए NABH करवाते हैं. 2 या 3% ये अपनी दिल्ली में होंगे जो यानी कि छोटे छोटे नर्सिंग को NABH को पूरा करते हैं, वो NABH करा लेते हैं. जो लोग नहीं करवाते उनका क्या करते हैं ये लोग? NABH वही क्वैक वाली बात आ गई. क्वैक का क्या करते हो आप? नहीं सर. अच्छा आप बताइए. क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स, और उनको ये क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर कंप्लायंसेस फॉलो कराते हैं. NABH जो है ये केवल हमें इंश्योरेंस के थ्रू ट्रैप किया गया है और इसमें हमारी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है. But otherwise, clinical establishment act is taking care of 60-70% of the things which NABH is advising you about. सर मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब यही बात कर रहे हैं कि ये मैंडेटरी है. कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, NABH कभी भी नहीं कहता है कि ये मैंडेटरी है, आप हॉस्पिटल को NABH के लिए जाना ही जाना है. It is your will and wish. If you don't want to go for NABH, don't go. But there is only one clause: until and unless if you want to go for CGHS empanelment, you will have to be NABH accredited. This becomes otherwise आपकी मर्जी है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, कोई कंपल्सन. सर ये केवल एक ये बहुत बड़ा लाई है जो शुरू से डे 1 से बोला गया है
कि NABH वॉलंटरी है और मैंडेटरी नहीं है। आज जितने भी एम्पेनलमेंट के लिए आप जाते हो, सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है। हाँ वही तो बात राजस्थान है, में अगर हमने एम्पेनलमेंट के लिए जाना है तो फिर आपकी अपनी वी रिक्वायरमेंट आर है। हेडिंग टुवर्ड्स 100% कैशलेस हेल्थ लेकिन केयर सिस्टम। नहीं, बिना लेकिन एम्पेनलमेंट के लिए कोई हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता सर। लेकिन एम्पेनलमेंट के बाद अगर आप NABH accredited है तो CGHS में आपको पता है 2 कैटेगरी है, एक NABH accredited हॉस्पिटल के लिए, एक नॉन NABH accredited हॉस्पिटल के लिए है। NABH accredited hospital if gets empaneled with CGHS they get 15% more rates by CGHS। 15% ज्यादा रेट that is देते हैं। definitely. तो आपकी मर्जी, आप मत जाओ, 15% रेट कम लो। आप अपने नॉर्मल जो CGHS से जो आपका टाई अप है, जो रेट्स फिक्स हुए हैं वो मिलेगा आपको। अगर NABH है तो 15% ज्यादा मिलेगा। तो आप इसके पहले भी देखिए ना, आप इसके पहले देखिए। और ये कंपलसरी नहीं है। आप ऐसे भी रेट्स रिडिकुलस ही हैं सर, CHS के रेट तो रिडिकुलस है। रेट तो वो तो वैसे 150 रुपए 15% बढ़ पे जाइए तो क्या होगा? नंगा क्या नहाएगा क्या? सुनील बोस, जी सर। डॉक्टर झा, now you take question from the audience. Chat box में question. चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन अपने डॉक्टर लोकेश अग्रवाल का है। इट्स अ वेरी क्वेश्चन, कैन एनीवन टेल एनी सिंगल बेनिफिट ऑफ NABH फॉर अ स्मॉल लाइक 15 to 20 बेड हॉस्पिटल? कौन बताएगा? बाय सिंगल कपल मैं बता दूंगा सर, मैं तो बहुत सारे बेनिफिट बता सकता हूँ। देखिए सर, इसमें जो मेन बेनिफिशियरी है NABH accreditation का, नंबर 1 इज द पेशेंट, एंड नंबर 2 द हॉस्पिटल, द ऑर्गेनाइजेशन, एंड नंबर 3 द स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल। पेशेंट को जो बेनिफिट है, पेशेंट्स आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी among all the stakeholders, and the accreditation will result in high quality of care and patient safety। अब क्या करते हैं हम लोग, वहाँ फायर की ट्रेनिंग देते हैं, मॉक ड्रिल, वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ का एक जो फ्रंट डेस्क पे जो बंदा काम कर रहा है, उसको भी पता है कि अगर हॉस्पिटल में फायर हो गया तो उसको कोड रेड अनाउंस करना है, और पूरी टीम आके उसको रेस्क्यू के लिए या फायर के मैनेज करने के लिए पूरी टीम आ जाएगी। तो ये एक आपकी प्रिपेयर्डनेस, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, आपके यू बिकम अ प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फायदा तो है ही। आपने जो एग्जांपल दिया, तो डॉक्टर खेत्रपाल आपकी बात करता हूँ। डॉक्टर खेत्रपाल, जो ट्रेनिंग वाले बंदे होते हैं, जो ट्रेन करने आते हैं, इवन दे डोंट नो, द ट्रेनर्स आर डोंट नो। नहीं सर, फिर हमने फायर सेफ्टी जो सर्टिफिकेट लिया है वो किस लिए लिया है? मतलब हमने 15-20 लोगों से सर्टिफिकेट ले रखे हैं कि फायर सेफ्टी से लेना है। सर्टिफिकेट एक कागज है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फायर, जो हम कहते हैं कि आप एक फायर डिपार्टमेंट के साथ में एक मेजर मॉक ड्रिल करो, NABH कहता है 6 महीने तो सर सारे जो बीच के जो हैं सिर्फ NABH इंप्लीमेंट करवा दीजिए, जो 15-20 जो बाकी के हमको लेने पड़ते हैं उन सबको हटवा दीजिए। अगर वो सिर्फ कागज हैं तो उनको हटवा दीजिए। नहीं, आप कह रहे ना कि NOC लिया हुआ है। डॉक्टर लोकेश, ऐसा है कि वी आर हियर, डॉक्टर लोकेश वी आर हियर फॉर द पैनल डिस्कशन। नोट हटवाने वाला कोई नहीं है यहाँ, कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो अपने डिस्कशन ये करना है व्हाट आर प्रोस एंड व्हाट द कॉन्स। तो हम आगे जाके ये जो ट्रेनिंग पार्ट है, एजुकेशन अवेयरनेस पार्ट है, ये वो बंदे उनको ट्रेन करना पड़ेगा। पहले जो ट्रेनर आते हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा, दे आर नॉट ट्रेन्ड प्रॉपर्ली। तो सर उसके लिए NABH की क्या जरूरत है? हम अपनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग हम अपनी एसोसिएशन के थ्रू भी तो ट्रेनिंग दे सकते हैं सर, उसमें NABH की क्या जरूरत है? चलो नहीं, ट्रेनिंग तो फिर दूसरा डॉक्टर खेत्रपाल जो असेसर आते हैं ना, असेसर आर नॉट अप टू द मार्क। इवन द RMO, समटाइम RMO एज असेसर बाय द IMN और स्पार्श के अंदर आ जाते हैं। वो क्या आपके लेवल पे कोई आपका RMO आके आपके असेसर बन के बैठ जाए आपके ऊपर, कैसा लगेगा आपको? आई एम नॉट अवेयर कि कोई RMO है, क्योंकि NABH असेसर बनने का भी क्राइटेरिया है। मैं Day 1 जब NABH असेसमेंट कोर्स शुरू हुआ था तो there 20 डॉक्टर्स वे सिलेक्टेड, आई वाज वन ऑफ देम इन द कंट्री। 2005-6 में हमने ट्रेनिंग कर ली थी। लेकिन अभी भी क्राइटेरिया ये है कि आपका 10 साल का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू शुड बी अ मेडिकल ग्रेजुएट। पहले सिर्फ डॉक्टर्स के लिए था असेसर कोर्स, अब नर्सिंग के लिए भी हो गया है, और मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए भी हो गया है। तो लेकिन उसके भी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि NABH सर अपने पास कोई डाटा है कि जो NABH के बाद क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट आया इंडिया के हॉस्पिटल्स में? ऐसा कोई डाटा है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर खेत्रपाल, आप बताइए। ये तो देखिए डाटा ओवरऑल अभी आज के डेट पे देयर नियरली 700 प्लस हॉस्पिटल जो NABH accredited हो गए हैं पूरे कंट्री में। नहीं, पेशेंट आउटकम में अल्टीमेटली हमारा टारगेट पेशेंट है ना सर, आपके हिसाब से
तो पेशेंट आउटकम में कोई फर्क पड़ा है एनएबीएच होने या ना बिल्कुल, होने की वजह से? बहुत सही सवाल है आपका. There are some mandatory indicators, clinical indicators and managerial indicators which are to be monitored by the organization. तो उसमें जैसे आपके मेडिकेशन एरर है, अगर पहले क्या होगा, मेडिकेशन एरर होगा तो स्टाफ छुपा देगी, बताएगी नहीं. अब इसमें क्या रिपोर्टिंग बढ़ गई है, रिपोर्टिंग फिर आप उसका रूट कॉज एनालिसिस करके करेक्टिव एक्शन लेंगे. तो नेचुरली वो डाटा आप पूरा मेंटेन करेंगे. एनएबीएच को पीरियोडिकली एवरी 3 मंथ्स में आपको अपने इंडिकेटर्स के डाटा भेजने पड़ते हैं. ठीक है, तो ये इससे बहुत फर्क पड़ा है कि आपके पास एक अपना डाटा है क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, और इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एनएबीएच क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी एंड सेफ्टी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आप इसको रेगुलर आप स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करिए, फिर उसको मॉनिटर करिए. अगर आप डेफिशिएंसी है तो आप उसको फिर रूट कॉज एनालिसिस करिए, फिर उसका करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए. तो सर ये एक और क्वेश्चन है. There's जी. one more question. They said what Dr. Mudit Sharma. He said, like you said, you have given the accreditation to the hospital. If something happens, like fire safety or something happens, you can go and assess that it has re-inspect the organization or the hospital that which has been followed. Yes. Yes, very good question. जब आपको हॉस्पिटल को accreditation मिल जाता है, उसके बाद अगर कोई एक complaint है, which the complaint is of serious nature, then NABH will go definitely ask for a surprise assessment. Surprise assessment करवाती है NABH. मैंने भी कई surprise assessment किए हुए हैं. मैंने कई verification assessment भी किए हुए हैं. तो ये assessment में NABH देखो, अगर आप एक बार accredit हो गए, उसकी validity है कि 3 साल के लिए, अब तो 4 साल के लिए हो गया है. उसके बाद every 2 years you have to undergo the surveillance assessment. ये आप वाकई में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे. लेकिन बीच ये ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बीच में एक बार दोबारा होगा आपका, ठीक है, वैलिडिटी पीरियड के बीच में. और कोई कंप्लेंट है आपके अगेंस्ट, कोई कंप्लेंट है तो एनएबीएच चाहे तो आपका एक सरप्राइज असेसमेंट करा सकता है. Very nice discussion. If there is no question, now I Dr. Jha to follow remarks. You give the introduction of the Dr. Vitul. Dr. Vitul just Rahul, introduction slide लगा दो Dr. Vitul की. Now I want to introduce Dr. Vitul Kumar Gupta, and he will give the concluding remarks. I will give his introduction just a minute. No, above. Yes, this one, yes. Yes. He's a professor, Dr. Vitul Kumar Gupta. He's MD, FICP, FACP, FICM. He's a consultant at Kisori Ram Hospital, Diabetes Care Center, Bhatinda. So I've got one panelist from Punjab also. He's a very renowned health and human rights activist. Is a member of the Executive Committee of Cardiology Society of India. He has been Vice President of RSDI Punjab chapter. He is the chairman of API Malwa branch. A roller founder in table tennis, lawn tennis. Is a very good sports person also. He was the chairperson of organizing committee Epicon 2013. This was held in Ludhiana. And he is the organizing secretary of Mapicon Bhatinda in 2014 and 2022. He has been very active in organizing conferences. He has got more than 50 papers, written 45 chapters and several abstracts, guest lectures and chair. And he is the chief editor of the API. ICB Monograph on COPD in this perspective. He is a member scientific committee of API 2016 Hyderabad. He was the member, and he is also a member in the DIPSI guidelines for gestational diabetes mellitus. And he is the chairman of API Malwa branch. He is the editorial advisory bureau in Heart Journal. So, Dr. Vitul Gupta, I will invite him for the concluding remarks after having so much of lively discussion among the panelists as well as speaker. So, Dr. Gupta, please. Thank you, sir, for very kind words. Thank you, Dr. Chavda, for inviting me for a concluding remark of the discussion, which I think is very obvious, that India doesn't need NABH. So even Dr. Suresh, who was to discuss the pros, I think he dwelled on cultural aspects, which is really, really very important. Why India is losing in healthcare as well as medical education, I think both are collapsing. So because we have culturally deviated from the path. So when I was searching, I came to know that only about 1,000 hospitals are NABH accredited. Dr. Khetarpal will agree with me on this.
Dr. Yes, sir. Khetarpal? जी sir. Yes. काफी About फायरिंग लाइन में हो सर. 1,000, only about 1,000 hospitals are accredited by NABH, right? हाँ जी. So NABH started in 2006. जी. Now it is 22 years almost, and No. we have been. नहीं सर 15 साल 16 साल हुए हैं सर अभी. हाँ 16 साल हो 16 साल गए. 17 साल हुए. 16 साल में हमने 1000 हॉस्पिटल्स को एक्रेडिट किया है. So that itself is telling us what is the state of accreditation of NABH in India, where there are almost 70,000 hospitals and 45,000 in private sector. So out of 45,000 private sector hospitals, only 1,000 hospitals are accredited. I don't think so it is a topic for discussion, because in 16 years, if it would have been about 10,000 or 15,000, we would have been doing this. But definitely, as various speakers have told us, this NABH is now being required by the various insurance companies. Still, after requirement also, only 1,000 hospitals are accredited. And NABH accreditation is, marred with, various things, as speaker have already told, that it is stage managed drama of NABH inspection. I have been part of NABH inspection in 2 or 3 hospitals, and I know how it is managed. You just ring up के यार अपनी बेटी का सर्टिफिकेट भेज दो, NABH की टीम आना है, आपने 11 बजे भेज देना, 1 बजे तक हम फ्री कर देंगे. So it is like that. And second most important part is NABH is how NABH is going to ensure quality control. About 10 days back, I visited a NABH accredited hospital where post-COVID patient was treated after 1 month, and the doctor has prescribed remdesivir and 3rd generation antibiotic without any reason. So it is NABH accredited hospital. So how NABH is going to have internal audit? Until and unless we have internal audit of prescriptions at random, we cannot ensure quality. As all the speakers have told, we are qualified doctors. The quality is inbuilt. No doctor is going to harm the patient, knowledgeably. That, I am for the patient's benefit. So if I am not treating the patient, good patient is not going to come to me again. So I think that for medical tourism, as sir has told, it might be used, or JCO accreditation is internationally known. But what India needs is not accreditation, not rules like you have told that there are 75, 72 laws which can be governed. It is ease of practice as well as quality control, which has to be self-imposed, or some regulatory measure which is acceptable to the doctors. As Dr. Neeraj has told, it doesn't increase the Babu Raj or corruption or litigation as such, or violence against doctors. I think it needs more of strengthening the private as well as public sector, because as you have told that लुटेरा बना देते हैं, because patients are going to expect from private hospitals a cheaper treatment, which is not possible. So we need to strengthen the public health care. लोगों को समझाना पड़ेगा कि डॉक्टर प्राइवेट में मुफ्त इलाज कैसा करेगा. अगर आप 5 स्टार में जाकर के बोलते हो कि मेरे को 5 रुपए में चाय पिलाओ, मैंने तो 200 रुपए देने नहीं, तो हाउ दे कैन बी अफोर्डिंग दैट. So instead we should propagate that we should strengthen the public health care. जिसके पास पैसे हैं, अफोर्ड करता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए. जो नहीं अफोर्ड करता, आप पब्लिक सेक्टर में जाइए. क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर वाला प्राइवेट में जाएगा, देयर इज बाउंड टू बी कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज हेल्थ इज वन सब्जेक्ट वेयर द फैमिली डजंट हैव एनी बजट. आपको रात में पेट में दर्द हुआ, आप गए, डॉक्टर बोलेगा कि अपेंडिसाइटिस है जी, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 25,000 रुपए लगेंगे. नाउ
You don't have that budget. बाकी का बजट है कि स्कूल की फीस कितनी देनी है, पेट्रोल कितना दिलवाना है, गैस कितनी लगनी है. तो inherently psychologically the pressure is there on the mind. वो डॉक्टर पे निकलेगा सारा गुस्सा. So I think until and unless we are able to control quackery, 10 lakh quacks are there in India. NABH doesn't have any relevance in this setup that even after 16 years, we are accrediting only 1000 hospitals. I think it is irrelevant to talk about NABH in Indian setup where there are so many other things which should be done. Thank you. Thank you, Dr. Vidal. Thank you, sir. Now, Dr. Lokesh. Dr. Ketani. नागपाल सर कोई स्लाइड शेयर करना चाह रहे हैं, प्लीज नागपाल सर. अच्छा, सर शेयर करो. Nothing, just wanted to share one slide. It was just mentioned कि NABH gives you 15% extra charges. This is taken from NABH's compendium for CGHS rates for upper GI endoscopy in a hospital. The CGHS rates for NABH hospital are definitely 15% high. But in the same city, a super specialty hospital can charge 23,200 for the same procedure, which NABH is giving 1,380 in a normal hospital. So these are the kind of ways in which rules and regulations are framed. These are the kind of ways in which Babus work. And this is all I wanted to show you when it was said that NABH gives you extra charges. So it is in interest of doctors. Okay, good. Okay, I think it was a very good question. I am pretty. Mr. Rahul, Lokesh की slide, Lokesh की slide है कोई? अच्छा. Rahul, Mr. Rahul, last slide, yes. Yes. Before that, I want to ask one thing from Dr. Khetarpal, which is, I think, question by the Dr. Lokesh. Dr. Khetarpal, sir, please. जी बोलिए. सर, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए भी NABH अब प्लान कर रहे हैं? प्लान नहीं, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जो NABH accredited है ऑलरेडी. आप जो दिल्ली का इंडिया का सबसे पहला जो पब्लिक हॉस्पिटल जो NABH accreditation जिसने लिया था वो है चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय. It was the first hospital in the public hospital in the country to get NABH accreditation. And in South also there are many government hospitals which have got NABH accreditation. Is it so mandatory for दिल्ली में कितने? Pardon? Mandatory. दिल्ली में कितने NABH accredited hospitals हैं सर, government hospitals? दिल्ली में there are very few. I think there are 3 or 4 hospitals, not many. Why so, sir? Because it is government hospital. The basic problem is managing the crowd. Like if you go to RML, Safdarjung, AIMS, they are very big institutes. तो सर crowd में तो सबसे ज्यादा quality management की जरूरत है सर. Quality तो उनको ही चाहिए सर. हाँ, वो जरूरत तो है, लेकिन it is difficult to manage. और वहाँ पे आप रेशो भी आप देखिएगा. अभी एक डॉक्टर OPD में 1 घंटे में अगर 50 मरीज देख रहा है, ठीक है ना, और नर्स पेशेंट रेशो भी आप देखिए. क्वालिटी तो सबसे ज्यादा वो रेट वही हो रही है. तो ये इसीलिए रेशो बढ़ाइए ना सर. इसीलिए नहीं जा रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल. इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेड. तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट मिलना चाहिए. अच्छा, मैन पावर, इक्विपमेंट, सारा जो सपोर्ट है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए. चलो, थैंक यू डॉक्टर राज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसकी आप एक समरी बना लीजिए जिससे ऊपर अथॉरिटी को भेज सके इस डिस्कशन की. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. आप एक समरी बना लीजिए अपने दोनों के बैनर के अंडर में ना, NDPF और उपचार के अंडर में. हम अपने गवर्नमेंट को सबको भेजते हैं कि हमारा ये डिस्कशन हुआ है, इसका जो समरी है बना के भेजेंगे. Am I right? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. What is the opinion of the panelist? Yes. Okay. All are okay? Okay. Yeah, well, we are fine, but we have to have a very unbiased and a very neutral opinion. Absolutely. It has to be very unbiased. Yes, unbiased. Yes, definitely. सर अनबायस्ड ओपिनियन दोगे तो फिर एक ही ओपिनियन बनेगा इसका. अनबायस्ड ओपिनियन नहीं, बायस्ड ओपिनियन देना पड़ेगा. अभी तो एक एनालिस्ट वो एक्चुअली क्या है, डॉक्टर विटल, लेट अस ट्राई अनबायस्ड. सारे फैकल्टी So स्पीकर्स you give a biased opinion, not unbiased opinion. नहीं सर, सबका अपना नहीं सर, पर्सपेक्टिव है. फिर तो NABH वाली वही होगी, इंस्पेक्शन होगी.
सर द टॉपिक हमारा प्रोस एंड कॉन्स है, तो प्रोस वाले भी है, कॉन्स वाले भी है। नहीं नहीं दोनों वही दोनों तो लिखेंगे। वही वो तो डॉक्टर बात राज अच्छा निकल के बनाते आई हैं। है। डॉक्टर राज इज राइट पर्सन no to make the summary. panelists except for that it might be useful for medical tourism. No other pros has been told, in fact. Okay. Sir, all the panelists, I think we are already more than 1.5 hours discussion we had, and there is no end to it. So Yes. finally, this vote of thanks, I invite Dr. Kantesh Khetani. He is based in Jodhpur. He is a MBBS. He has done MHA. He is a co-founder along with Dr. Raj and spokesman of Upchar. He is president of Association of Medical Practice of Jodhpur. He is a life member IMA and associated with the oldest multi-specialty private hospital of Jodhpur. NABH कैसे है? So I request NABH हॉस्पिटल कैसा खितानी का? I request Dr. Khetani to give vote of thanks. Dr. Khetani, please, sir. वो तो आउट होगी, क्या बात होगी? आप ही दे दो डॉक्टर जा, I mean, they didn't. आप ही दे दो. So I must thank all the panelists, very senior panelists, Dr. Nagpal, Dr. Khetarpal, Dr. Bitul, Dr. of course Lokesh, asking such a wonderful questions and very passionate about NABH, Dr. Rajsekhar Yadav, and the last but not least, Dr. Adam Chawla has been such a wonderful. SK Arora भी है. SK Arora. 1 minute नहीं हो पाए. SK unmute नहीं हो पाया, इसलिए नहीं किया. हो नहीं पाया. You all have contributed very immensely, and Dr. Chawla for initiating this whole webinar and very thought-provoking discussion we had. So I thank everybody. And finally, Mr. Rahul Jain, who's done this audio-visual work very nicely. And thank you, everybody, all the participants also who was participating in the webinar. So I thank each and one of you for this wonderful session. Thank you very much. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Wonderful discussion. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Well done, sir. Okay. Thank you. Thank you so much.